Hello, hello, hello. अब तो I get like sort of like even at times मैं खुद का खुद ही मजाक उड़ा रहा हूँ just because I'm circling back to the same old thing over and over again. So again I am back, and this time what is it that I want to do this time? Anything superficial that I want to achieve, और जो कि मैं एंड में नहीं अचीव कर पाऊंगा, और फिर बिकॉज आई एम नॉट एबल टू अचीव दैट आई विल बी लाइक नहीं हुआ मुझसे। अब वापस से एक वर्म होल, लाइक वर्म होल भी नहीं बोल सकते, इट्स लाइक अ होल दैट आई कीप फॉलिंग इनटू, एंड इट्स बीन हैपनिंग सिंस आई वाज 17। सो दिस टाइम अराउंड मुझे खुद को हंसी आ रही। सो दिस टाइम अराउंड लेट्स जस्ट ट्राई एंड फिगर थिंग्स आउट, राइट? सो वेलकम टू प्रॉब्ली सीजन 2, जिसमें अपन और बहुत सारे एपिसोड्स बनाएंगे। बट वेलकम टू सीजन 2 ऑफ कुछ भी बातें। दिस सीजन्स टाइटल इज फिगरिंग थिंग्स आउट. The idea behind this is not to overcome it or anything. It's just be more sincere about what I intend to do with my whole life. And slowly and gradually, I think this time around, my purpose of this entire thing is to just figure things out. Like I want to know कि क्या क्या मैं नहीं कर पा रहा हूँ, क्या क्या मैं कर पा रहा हूँ, कैसे कैसे हो रही है। तो मोस्टली डॉक्यूमेंटेशन जर्नी, एंड मेरे को तो विद द पॉडकास्ट आई डोंट इवन हैव एनी इंटेंशंस ऑफ लाइक कि ये चल जाए, इसमें ऐसा अच्छा हो जाए, ऐसा हो जाए। ये सब बकवास चीज़ है। अभी इस सब चीज़ों पे फोकस नहीं करना है। राइट नाउ द आइडिया इज कि just see what is it that you're doing or not. So every now and then what I'll do is कि मैं घर पे क्या कर रहा हूँ वो आके और मैं पॉडकास्ट रिकॉर्ड करके और चले जाऊँगा, ठीक है? और इट वुड बी अ डॉक्यूमेंट फॉर मी, एंड 2 months 3 months down the line we'll see what happens, and I either we are growing or not. Okay, I want to do it across all mediums so that I improve how I need to articulate my thoughts when it comes to reading, right? Like when it comes to writing and speaking. So podcast would be for speaking, and the writing wala part would be just the blogs and stuff. So yeah, so just a brief summary of कि पूरे दिन में क्या किया मैंने। तो लास्ट नाइट आई वाज जस्ट ट्राइंग टू थिंक कि मुझे क्या क्या करना है अगले दिन के लिए, ठीक है? एंड दिस हैज़ बीन अ कांस्टेंट habit of me trying to write things down. I have so many diaries, I have so many pages just filled with things that I need to do tomorrow, और उनमें से मैं एक भी चीज़ नहीं कर पाता हूँ। आई नो अ फ्यू सर्टेन थिंग्स आर देयर, एंड आई एम नाउ अ डेज कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड ऑल्सो बाय अ लॉट ऑफ थिंग्स अराउंड मी। बट मेरे अंदर ना एक पता नहीं, आई एम जस्ट नॉट एबल टू फिगर आउट कि क्या एक ऐसी प्रॉब्लम है उस वजह से मैं ज़्यादा कुछ कर ही नहीं पाता हूँ। आई थिंक कि एक प्रॉब्लम ये है कि आई ओवरकम इट, आई जंप ऑन थिंग्स वेरी फास्ट, ठीक है? तो क्या पता वो होगा, तो प्रॉब्ली ये। बट आई फील वेरी बैड व्हेन आई एम नॉट एबल टू अचीव द थिंग्स दैट आई सेट आउट फॉर माई सेल्फ। तो वो एक चीज़ कॉन्स्टेंट, मतलब ये कि कॉन्स्टेंट सा बैटल है, कॉन्स्टेंट सा एक स्ट्रगल है। तो वो था। तो फिर कल रात को आई सैट डाउन सिंसियरली। अ, अभी भी मुझे ना ऐसी थोड़ी अंदर से हँसी आ रही है, क्योंकि कल भी मुझे हँसी आ रही थी थोड़ी-सी कि अगेन वी आर बैक टू अ लिस्ट। बट द आइडिया बिहाइंड दैट लिस्ट वाज़ कि things that I wrote in that list was कि I'll have a good workout, okay? I'll do the necessary things that I'm supposed to do, and like household chores and all that I'm supposed to do, that record a podcast, and read one chapter of the book, or one I currently I'm reading 48 laws of power. So first उसका एक chapter पढ़ना था, and then probably shoot a reel and send it out. uh, Out of all this thing, household chores, I think they automatically happen. People rely on you, and you're supposed to do all those things, and that's why you do all those things. It's like it's an automatic thing which happens usually, वो होना ही है, आप उसमें कुछ भी नहीं कर सकते until unless you want to be the bad cop in this entire thing. So पता नहीं, तो वो तो ऑटोमेटिकली हो गई थी सारी चीज़ें। When it comes to having a good workout, I tried having a good workout. I think that I gave it my all, but again there is no metric set with me in my working out wale parts. Okay,
आई एम स्टिल ट्राइंग टू अंडरस्टैंड वेयर इज़ माई लिमिट एंड हाउ आई नीड टू क्रॉस दैट लिमिट. तो वो अभी एक ना एक कॉन्शियस एक एफर्ट मुझे शायद लगाना है उसके अंदर, टू फिगर आउट कि क्या क्या मुझे करना है. तो अगेन लाइक द थीम इज इट सेल्फ इज रिपीटिंग, नो, फिगरिंग थिंग्स आउट. तो फिर मैंने वो किया. पूरा दिन मैं सोच तो रहा था कि मैंने वर्कआउट के अंदर क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया है. होपफुली मैंने जस्टिफाई किया हो अपना वर्कआउट. बट then again, when I came back home, I cheated on my diet for no reason. I don't know. Probably I was thinking too much about the task that I'm supposed to do, and how have I failed myself for the first half of the day. And because of that, I binge started eating things that were not good for me. I was constantly reminded to drink a lot of water. That also I ignored. I only had like today I only had like 3.5 liters of water, maybe less. तो वो भी हो गया. वहाँ पे एक और फेलियर सेट हुआ. फिर वी केम टू द second half of the day, which is mostly me working on the things that I'm supposed to work on my office. वो तो जैसा नॉर्मल प्लेन सा है वो तो होता ही रहता है, उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं थी. उसके बाद में आई डोंट नो, उसके बाद में आई थॉट आई विल डू अ फ्यू थिंग्स ऑन माई ओन विच वुड बी कि मैं किताब पढ़ लूँगा. बट देन अगेन आई प्रायोरिटाइज प्लेइंग गेम्स ओवर me doing something. So again I set out a I was I wrote out a thing for me कि मुझे कल ये करना है, and then give in to my temptations or my weaknesses. तो वो मुझे पता नहीं चल रहा है उसके अंदर है क्या. तो मोस्टली तो मतलब दिस वाज माय डे, सो कॉन्स्टेंटली रिमाइंडेड about the things that I'm supposed to do, but then again didn't do anything about it. So एक ये कांस्टेंट से एक लूप चला हुआ है. तो उसमें से अब कॉन्शियस एफर्ट्स करके बाहर निकलेंगे, और प्रॉब्ली द सीरीज विल गो ऑन फॉर अ मंथ, और पता नहीं ये अब ये जब तक चल जाए तब तक चल जाए. आई एम सो स्केप्टिकल ऑफ माई सेल्फ दीज डेज, तो आई कांट ओवर कमिट नाउ. आई एम नॉट ट्राइंग टू ओवर कमिट एनीथिंग. टुमारो विल मीट एंड दैट्स फॉर श्योर. उसके बाद का आई डोंट नो. ओके, लेट्स डू दैट. लेट्स स्टार्ट विद अ वेरी बेसिक फंडामेंटल्स. लेट्स थिंक कि क्या क्या कर सकते हैं अगले दिन, एंड खाली उसी को करते हैं. उसके बाद में सारी चीज़ें नहीं, लाइक नेक्स्ट 3 मंथ्स 4 मंथ्स डाउन द लाइन वो मैटर नहीं करता है. एक ये फैंटेसीज के अंदर जीने का एक पता नहीं क्या एक प्रॉब्लम है, वो भी एक प्रॉब्लम है कि आई विल इमेजिन अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग फॉर मी, और मी डूइंग थिंग्स, पीपल डाइंग, ऑल सॉर्ट ऑफ क्रेजी नॉनसेंस हैपनिंग इन माई हेड. तो वो एक चीज़ कॉन्स्टेंटली चलती रहती है. तो प्रॉब्ली उसके ऊपर भी थोड़ा सा मैं ना काम कर रहा हूँ. बट अगेन यू सी लाइक द थिंग्स दैट आई एम कॉन्स्टेंटली डूइंग ट्राइंग टू डू, these are a lot of things, again takes a lot of effort. But I think कि now I have to do all of them simultaneously. Why? Because I've been slouching a lot over the last few years. Slouching in terms of कि मैं बहुत आलस कर करके I was being very lazy, and I should have found uh, myself, like found a way to get rid of all these challenges that I'm having and just overcome these challenges. ऐसा कुछ करना था, बट हुआ नहीं. पता नहीं, प्रोफेशनल लाइफ में मोस्टली सही है, बट आई प्रेफर पर्सनल लाइफ मोर, राइट. तो उसके अंदर कुछ नहीं किया. बट हाँ, आई एम अबाउट टू रैप अप माई डे. 12:30 इज माई टाइम वेर आई गो टू स्लीप, and I am now supposed to, hopefully, like in my thought, I am now supposed to write a blog, publish it, uh, then shoot like the edit the video reel, schedule it for tomorrow, and then sleep. And I around I think 45 minutes, so I'll probably be able to do it. So yeah, यही है. तो ये figure out करने की कोशिश कर रहा हूँ, trying to make conscious choices. I usually tell people that everything that you do, you have to, if you want to master it, or anything that you want to do in life. अभी देखो मुझे भी बहुत सारे challenges है in personal life. Professional में I think ऑटोमेटिक एक system in place है which I am not even aware of, बट उसकी वजह से मेरे काम हो जाते हैं. व्हेन इट कम्स टू पर्सनल लाइफ, थोड़े से चैलेंजेस है, वहाँ पे मैं थोड़ा लेजी वगैरह हो जाता हूँ. तो मुझे ऐसा है कि द मोर कॉन्शियस यू आर अबाउट द डिसीजंस दैट यू आर मेकिंग, वहाँ से वेदर यूल बी इन हेल और इन हेवन, वो वहाँ से वो डिटरमाइन होता है. सो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, इफ आई चूज टू बी लाइक दिस एंड नॉट डू एनी थिंग about my life, if I am making a conscious choice here,
then the hell that I'm supposed to face is something that I'm calling, like I am aware of that hell that will be there for me, waiting for me at the end of this line. But if I am making a conscious effort into changing the course of my actions and trying to figure things out, तो जो कि मैं अभी एक अच्छी चीज़ करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो अगर ये भी मैं करता हूँ तो देन आई एम अगेन मेकिंग अ कॉन्शियस चॉइस कि अब मुझे ये चेंज करना है, आई हैव टू चेंज इट. सो एनीथिंग दैट यू वांट टू डू इन लाइफ, एनीथिंग दैट यू वांट टू सेट आउट फॉर योर सेल्फ, राइट इट डाउन, गोल वगैरह कुछ भी ऐसा अचीव करना है, तो आई थिंक यू हैव टू बी सो कॉन्शियस ऑन अ मोमेंट. आई डोंट नो मोमेंटरली एक वर्ड होगा नहीं होगा, बट एक एवरी मोमेंट पे यू हैव टू बी वेरी कॉन्शियस, कॉन्शियस ऑफ द डिसीजंस यू आर मेकिंग, ताकि जो भी उसका एंड रिजल्ट हो वो आपको मिले, होपफुली. तो यही एक चीज़ है. तो नाउ आई एम ट्राइंग टू जस्ट प्रैक्टिस दिस थिंग दैट आई जस्ट सेड. तो कभी कभी हो जाता है ये ऑटोमेटिकली. अब मुझे इसी चीज़ को कॉन्शियसली एक सिस्टम बिल्ड करना है अराउंड माय पर्सनल लाइफ, तो वो कर रहा हूँ मैं. उसके अलावा, so before I am wrapping up my day, I just read this powerful law of the 48 laws of power, and it is such a good thing that I've read, not because I have said this multiple times, but this is a law that I've seen happening in a lot of movies that are around me, series that I've watched, people that I've observed. ये होता है. And the law is very simple. It's a very simple law. Anybody can understand it. It is so simple, as like simple as in ki, the laws. I'll just explain the law. Okay. And the law is that you should never outshine your master. Now, who's my master? Why I shouldn't outshine them? Uh, what does it mean for me to not outshine myself? So उन सारी चीज़ों में है क्या चीज़ें, तो उसमें ना मुझे बहुत एक fantastic idea मेरे माइंड में आता है कि never outshine the master, which means that from the perspective of the book is that you never know, the world is all about power games, who is that more power and who has less power and who rules the world and all this nonsense. But the thing that I have learned in this part of life, with this part of life is that most of the time when people play power games, no, whether you're subconsciously playing it or consciously you're playing the power games, uh, you tend to miss out on the point or miss out on the goal that you actually have for yourself. For example, you go into a job, you start that job, and somewhere down the line you try to, like, you try to showcase that you know a lot, which at some point of time will cause your manager to do something about you, or probably put you down, or do something which will make him feel more superior and you feeling inferior. Now what happens here is, most people, they don't know what the battle is all about, and because they don't know the battle, what it is all about, they fight this, very small battle which is between these two people, like, uh, and when I think about it, I'm like, dude, I am trying to fight the cosmic level ka battle, which is ki I want to know what my, like, the purpose of me being me is. Okay, and if that is the goal, then these micro battles where my boss thinks of something, and then I'm trying to outshine him, or I'm trying to prove him wrong, things these very small battles of everyday life, I think that's where people miss out on the point. Like, you could gain a lot just by understanding what kind of battle you're fighting, and whether you want to choose to, like, whether you're choosing to fight that battle or not. I think you will gain more there, in that choice itself, right? If you choose to fight the battle, then there is this कि मुझे करना है, there is a conscious thing, like you're aware of that in every moment you have made that decision, so you'll stick by it. But if you are aware कि bro, this, like, I am trying to fight some other level का battle, तो at the end of the day this entire thing does not matter to me at all कि मेरे बॉस मेरे बारे में क्या सोचते हैं, and all that, like, where am I heading with my career, all this thing, all this nonsense actually does not matter. Who is giving me validation, who's giving me prizes, performance award, I think in the longer run, in the larger scheme of things,
दिस डज नॉट मैटर कि आपको मतलब मुझे तो समझ नहीं आता है, ये पर्सपेक्टिव ही नहीं समझ में आता है कि व्हाई टू सीक वैलिडेशन फ्रॉम अदर पीपल, बट वो एक अलग एक कॉन्सेप्ट ही है, जो कभी कभी तो मैं भी कर देता हूँ, कभी कभी क्या मैं मोस्टली कर रहा होता हूँ, सब लोग मोस्टली कर रहे होते हैं, वो एक अलग चीज़ है। बट मुझे ये समझ नहीं आता है कि व्हाई टू फाइट अ बैटल विच हैज़ नो लाइक लाइक यू हैव अ वेरी स्मॉल चांस ऑफ विनिंग। तो ये उसके अंदर ये नेवर आउटशाइन द मास्टर में ये यही बताते हैं कि at some point of time you will subconsciously or consciously will be in a battle where the superior person will try to exert some force on you, try to put you down. Okay, and you don't know whether you are outshining him or her or not. So the safest thing that you can do in this is never do something that will make others feel less about themselves, right? Never do something like that. If you have a manager and your goal is to like just earn more money, go to the next level, go to the next level, then you are not supposed to question your manager's existence or anything. Why am I like fixated on the managers वाला example? But किसी भी चीज़ के अंदर आपके पड़ोसी के साथ आपको ये सब नहीं करना चाहिए कि हमारा घर बहुत अच्छा है, आपका तो ये मतलब बकवास बैटल्स हैं ये। एंड एट द एंड ऑफ द डे यू नेवर नो व्हाट द अदर पर्सन माइट कॉस्ट यू, और आप अपने फाइनल गोल से कितना डिविएट हो जाओगे उस चीज को लेकर। ओके, तो मेरा तो यही पर्सपेक्टिव है विद दिस गोल इज कि बी अवेयर कि हुज फीलिंग हर्ट ऑफ ऑल व्हाट यू आर डूइंग। एट सम पॉइंट ऑफ टाइम इन माय अर्ली फेजेस ऑफ माय लाइफ मैं ये करता था, मैं प्रॉब्ली अभी भी करता हूँ, सम ऑन सम लेवल आई हैव टू बी कॉन्शियस अराउंड दैट। शायद मैं करता हूँ ये चीज़, कि वहाँ मतलब ट्राई टू एक्सर्ट फोर्स ऑन अदर्स, लाइक फोर्स इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजिकल फोर्स की भैया तू ऐसा है, अपन भाई मैं कैसा हूँ तू कैसा है, अपना बराबरी नहीं है, वो सारी चीज़ें आई थिंक। एंड अगेन दिस डिविएट्स मी फ्रॉम द इनिशियल goal of me trying to know what I am set out to do in this life, what is being me means, all this thing, वो सारी चीज़ों से मुझे हटा देता है। तो the more I think about it, the more this law makes sense, and the more I will try to obey this in my life. And whenever I see a war or a battle happening, uh, just because of this, where I am trying like where I am just showcasing my capabilities, but the other person is getting hurt by that, I think I will tone it down moving forward, just because I want to see why this happens, just because I want to collect more evidence, I want to see what happens. So yeah, so this is what I have read. Again, this can't recommend this book right now. I am not sure what the entire book is all about, what the entire 48 laws will tell me, बट होपफुली नॉट होपफुली कल तो मिलेंगे अपन, है ना? और कल हम लोग बात करेंगे लॉ टू क्या है उसके बारे में। तो आई विल रीड एवरीथिंग दैट इज देयर इन दैट एंड शेयर विथ ऑल ऑफ यू ऑल, विल फिगर थिंग्स आउट ऑन आवर ओन। अभी के आज के एपिसोड के अंदर आई डोंट थिंक देर इज समथिंग दैट यू माइट हैव लर्नड और कुछ मज़ा आया होगा, पता नहीं, ये सब बकवास चीज़ें। तो इफ़ यू आर लिसनिंग देन थैंक यू सो मच। आई होप दैट यू प्रॉबेबली लर्न समथिंग न्यू, बट अभी के लिए शुरू आज के एपिसोड को एज अ डॉक्यूमेंट्री समझो मेरी। और बस दैट्स इट फ्रॉम मी। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी फॉर 18 minutes or something, and I shall see you in the next one. Tomorrow I'll see you. I have things that I need to do, but I will document that in something else. Yeah, cheerio, bye। cheerio क्यों बोला मैंने, I don't know, bye।